Good morning, children. Welcome back to your EVS class. Today, in the recapitulation series, we are going to attempt reading comprehension. Do you know, students, what is reading comprehension? Let's move ahead and see what is reading comprehension. So, what are we waiting for? Let's get started. Good morning, my dear students. Your EVS teacher welcomes you all in your own adventure class, and that is EVS. Students, today in this module, we are going to attempt reading comprehension. आपको याद है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम किसे कहते हैं? आई नो, आपने तो पढ़ा ही होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम किसी भी टेक्स्ट पार्ट को रीड करके उस पे बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। So, without wasting any time, let's get started with reading comprehension. Students, इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम किसी टेक्स्ट पार्ट को रीड करेंगे एज वेल एज उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करेंगे एज वेल एज उस पे बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो here is the instruction for you. Here it is given, read the passage carefully and answer the questions that follow. That means आपको करना क्या है कि नीचे जो पैसेज दिया गया है उसे केयरफुली रीड करना है एज वेल एज उस पे बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट पार्ट। We all live in a house with our family members. That means कि हम सब अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एक हाउस में रहते हैं। A house has a roof and walls that shelter us from heat, cold, rain and wind. That means कि हाउस में रूफ और वॉल्स होते हैं जो कि हमें शेल्टर देते हैं, दैट मीन्स छाया देते हैं। एंड वो हमें किससे बचाते हैं? यस, वो हमें हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड से बचाते हैं। इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम एनिमल्स एंड पीपल who can harm us like thieves. That means ये हमें एनिमल से एंड उन लोगों से बचाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि thieves. Thieves मीन्स जानते हो ना, चोर। A house has doors and windows that let in fresh air and sunlight. That means house में doors and windows होते हैं जो fresh air और sunlight को आने देते हैं। Houses are of different kinds. हाउसेस एक जैसे नहीं होते, वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, एंड उन्हें हम कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस के नेम से जानते हैं। कच्चा हाउसेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट पक्का हाउसेस वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लिसन्ड एंड अंडरस्टूड दिस टेक्स्ट पार्ट वेरी केयरफुली. So, are you ready to answer the questions? Let's see and try to understand what are the questions given over here. So here, our first question is, where do you live? अब आपको ये बताना है कि आप कहाँ रहते हो। Second question is, why do we need a house? That means हमें house क्यों चाहिए? Third is, what does a house have? That means कि house में क्या होता है? Fourth is, what kind of houses are there? That means houses किस तरह के होते हैं? Fifth is, name the two different kinds of houses. अब आपको क्या करना है? Two different kinds of houses का name बताना है. And your last question is, which houses are not strong? अब आपको या उस house को mention करना है जो houses strong नहीं होते. Now students, all these answers will be found in the passage. So, you have to read the passage once again very carefully and find out the answers. And सारे answers आपके passage में ही छुपे हैं. So, that's it for today kids. I hope after the explanation you all will be able to answer the questions correctly. So, we will meet again in the next video with the answers of the questions asked in reading comprehension. So till then, send me your homework, find the answers.
Wear mask, follow hygiene, maintain social distancing. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.